It is the continuation of last lecture. As we know that we were discussing the centric relationship. We discussed that we have horizontal relationships. In that category, we have two different relationships, two group of different relationships. One group is centric relationship and other is your eccentric relationship, means other than your centric. Last time we discussed what is centric relationship. It is a bone-to-bone relationship, which is maxillomandibular relationship category, in which your head of the condyle articulates with the disc intervening with the anterior most and superior most part of your slope of your articular eminence. So this is totally the relationship it described within the joint there. But how come it's possible to record this relationship? Today we will discuss that. A few points I discussed last time, but I will repeat those points to understand the things. As I discussed that we have tactile interocclusal check record method, we have functional chewing methods. With this category को मैंने आपको कहा था for anything. We don't want to discuss this category. This is now in the past we used to use this category, but nowadays we are using this either this interocclusal check record method or graphical method. उसमें हम we have two different ways to record this graphical method. One is intraoral method and other is your extraoral method. Then you have phase 4 records. Phase 4 records, with the help of phase 4 records, we are able to see the hinge axis position, and whenever your jaw is in hinge axis position, that means it is in centric relationship. So whenever your head of the condyle and your hinge, where your this head of the condyle rotates, so that means it is in centric relationship. So other methods are there. उनको छोड़ देते हैं, अभी फिलहाल हम डिस्कस करते हैं कि what is check record method, interocclusal check record method or tactile, where you use your manipulation, your fingers to bring the mandible in centric relationship by guiding the patient's jaws. That's why this is called tactile interocclusal check record method. This tactile word is used where you use the sense of your patient, the perception of your patient. So in that case, we have three different steps to perform your tactile interocclusal check record method. One is your training of your patient, then indexing, and then the recording. What is check? The training of the patient, you insert both of your rims, maxillary and mandibular occlusal rims in patient's mouth. You have done the vertical dimension, you have done the orientation relationship. Now this is the final relationship of your this category. So what you will do, you will guide the patient. There are two methods to guide the mandible. One is your chin point guidance. You can see here. Other is your bilateral manipulation method, where you used to make a C. I discussed this thing last time कि आपने thumb कहाँ रखना है, fingers, 4 fingers को किधर रखना है. Then you will be able to guide the patient's jaws. So this is the way, manipulation of mandible for your centric relation registration. This is chin point guidance, where you will keep your thumb over the chin pout area. The other finger is supporting the
the base of your chin there, your head must be supported. Until unless if your head is not supported by your backrest of your dental unit, you will not be able to manipulate the mandible in its most better to say in its centric relation position. So just see the angle of your movement there. You have to force your mandible, you have to manipulate your mandible backward and upward. And if you are able to do that, mark a line from your maxillary to mandibular rim and repeat the procedure. So multiple times you must see the coincidence of this line. If your line is not coinciding with the maxillary rim part is not coinciding with the mandibular part of your line, that means your CR is not consistent. So if you want that your CR must be accurate, this line must be coincidental with each other. After that, you put down some registration material in between, that is called bite registration material. As you can see here, it is a zinc oxide eugenol paste, usually we used to call it, but this is basically the best name for this material is metallic oxide paste. Why? Because this is eugenol free nowadays. We don't have eugenol, we have polyacrylic acid there. Then you can use the wax. Specialized waxes are made for recording the jaw relationships. Best wax is your alu wax, which is silver in color, where we have added the aluminum to give stability to your wax. Otherwise, this modeling wax or beeswax or any other material wax you name is not for your bite registration though. So you can use the bite registration silicones. You will not use this impression silicone. These bite registration silicones are a specialized material having short clinical time, having more, you can say, this resiliency while you are recording the jaw relationship. But once they got, set, they are comparatively more harder than your impression silicones. Why? Because impression you want that the flexibility would be there, should be there too, in order to remove them from your medium sort of undercuts in your impression. What is the requirement? Dimensionally accurate होना चाहिए आपका. Bite registration means the intervening material in between your upper and lower rim should be dimensionally stable, should be fluid enough. While you are recording the impression, must have adequate working time. It should give such a time that you are able to manipulate the mandible in centric relationship. Short setting time, not that much that you are not be able to control the jaw movements. It has to be half minute to 1 minute, not more than that. So you can use, if you do not have this bite registration material, you can use the staples. So today, this part we have already discussed in last lecture, but actual part will start from this slide. There's one method that is called graphical method, और इसको दूसरा नाम ये भी कहते हैं Gothic arch method या Gothic arch tracing method. Excursive method भी इसका नाम है. Why it is called excursive or Gothic arch method, I will tell you later on. You can use this method to record centric relationship and eccentric. Both the relationships can be recorded with the same method. For this method, you need one device that is called centric bearing device. वो डिवाइस किस तरीके की होती है, थोड़ा सा इस पिक्चर में इतना क्लियर नहीं है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ. इस तरीके की होती है. एक प्लेट इस तरह से होगी. You would have this metallic plate just like this, and the other plate used to have a screw like this. So one plate is flat, do not have anything. The other plate used to have this screw in it. So you used to have, this is called stylus. This screw is used to call, this extension of your screw is called stylus.
So you can see in this picture, the lower plate is in mandible and this is the maxillary jaw. You can see this stylus here, which is touching the lower plate. So these two plates together, they are called centric bearing device. So this centric bearing device, pair of central bearing plates, these two plates, one is this plate and other is this plate. Now you can understand this this picture is not that bigger in size, that's why it difficult to understand. So this plate is having stylus and this plate is, you know, it's a flat plate which used to have this tracing. So the plates attached to your maxillary rim contain stylus bearing pen. The plates attached to your mandibular rim consist of a tracing table. It's a flat plate, do not have anything. It's a tracing table there. So what we used to do, we attach this one plate with the maxillary rim and other plate with your mandibular rim there. Same plates would have this extension, extraoral extension like this. It is attached with the mandibular rim, but this extension is there for your mandible and your maxilla. So, and one of your extension used to have stylus and other extension used to have this table there. Same thing which we do in your intraoral method is performed in your extraoral method. Here the bearing plates are a bit different. Do used to have some, you know, extension, and you can see this tracing, whatever the tracing you will get over this table extraorally. So this method is comparatively easier to जी सर. see than this method. सर जी बेटा. सर कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं सर, उनको शायद कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी. क्या कह रहे हैं, जरा जोर से बोलिएगा. सर सर कुछ स्टूडेंट जो है ना अभी वेटिंग में ना सर, उसको मतलब प्लीज अगर आप अलाउ कर ले, क्योंकि वो पास कनेक्टिविटी ठीक की है, मैं कर प्रॉब्लम रहा है हूँ बेटा, सर. कर रहा हूँ. थैंक यू. अच्छा, ये दोनों प्लेट्स एक इंट्राओरल मेथड के लिए इस्तेमाल हो रही है. दीज टू प्लेट्स यूज फॉर योर इंट्राओरल मेथड्स एंड दीज टू प्लेट्स यूज फॉर योर एक्सट्राओरल. यहाँ आपके पास ऊपर ब्लू निशान से नजर आ रहा है. दिस इज नथिंग बट अ इंक which is sprayed or spread over your tracing table. तो जब ये स्टाइलस, ये जो पेन है, ये इसके ऊपर मूव करेगी तो यू यूज टू हैव अ ट्रेसिंग ओवर योर ब्लू इंक देयर. आप ब्लू इंक लगा दें या कोई आपके पास बीज वैक्स होती है वो लगा दें, वो नहीं है तो अल्कोहलिक चौक आती है. आजकल बॉडी स्प्रेज आ रहे हैं अल्कोहल चौक वाले, जिसको हम पाउडर स्प्रेज कहते हैं, वो इसके ऊपर स्प्रे कर दें तो यू विल, व्हेन दिस स्टाइलस मूव ओवर दिस plate, you will get the reading, you will get the tracing over this table. That's why this is called tracing method. So when you insert these in patient's mouth, see this, you are one of your tracing table. This is your tracing table which is attached to your mandible. Do not have anything there. It is attached to your mandibular rim, and then one of the tracing plate which is attached to your maxillary area or maxillary, you can attach it with the maxillary rim even. Sometimes you used to remove this rim and directly we attach it over the base plate there. And then you can see in patient's mouth, when you ask your patient to move the jaw forward, then go backward, then go left, then again go back, then move right, again go back. So you will get this sort of a tracing there. एक V बनेगा इस तरीके से. जब ये फॉरवर्ड मूव करेगा, जस्ट ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट दिस कर्सर. एक ये फॉरवर्ड मूवमेंट है. ये फॉरवर्ड मूवमेंट है. दिस फ्लैट लाइन इज योर फॉरवर्ड मूवमेंट. देन गो बैक, then move to your right, then go back, then move to your left, then go back. So you have a common point there. These all movements are, you know, finally ending up into one area, and that is the area from where these all the movements are starting. जैसा कि मैंने आपको centric relation में कहा था, this is a zero position. So this, if you are getting this V
and you are getting this arrowhead there. The tip of this arrowhead is basically a centric point from where your forward movement is starting, then you are going back, then you are moving to left, then you are going back, then you are moving to right, and then going back. If you are not getting this V, that means your movements are not appropriate. So you have to repeat the movement. So you will get this sort of a tracing there. This is your protrusive movement, forward movement, don't go back. This is your left and this is your right movement. And these all movements are ending up in a point where they are merging with each other. This 0 point is basically a centric relation point. So this is again the graphical representation, how you will get the tracing. See the shape of this ट्रेसिंग, ये गोथिक आर्च या हट की जो आपकी रूफ होती है उसका शेप है. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड गोथिक आर्च ट्रेसिंग मेथड, बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ दिस ट्रेसिंग देयर. अभी आपने रिकॉर्ड तो कर ली पेशेंट के मुंह में. हाउ विल यू ट्रांसफर इट ओवर योर articulator? So you insert, you place your one of your tray to your maxilla and other is to your mandible, then you insert it in patient's mouth, guide the patient to move forward, backward, left, backward, right, backward. You will get this tracing. But this is a tracing. How you will transfer it over your articulator? तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका है कि हमारे पास जो बर्स आते हैं नॉर्मली, जो हम डायमंड बर यूज करते हैं, उसका लेड ऊपर का जो ढक्कन होता है वो ले लें और उसको 4 into 6 सेंटीमीटर के एरिया में काट लें. 4 सेंटीमीटर उसका वेट, 6 सेंटीमीटर उसका लेंथ. उस बर बॉक्स के लिड को काट लें इतना, और उसमें 2 सुराख करें 4 to 6 मिलीमीटर के गैप से, एक ही लाइन के अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर. जो आपका 6 सेंटीमीटर लेंथ है उस रो के अंदर, आप उस एरिया के अंदर बीच में 4 to 6 मिलीमीटर के गैप से 2 सुराख कर लें उसके अंदर. देन फिक्स दिस स्ट्रिप ओवर योर ट्रेसिंग प्लेट. फिर क्या करें इसको, ये देखें, ये वो 0 पॉइंट है, ये यहां दिखा रहा है इसके साथ कि ये वो 0 पॉइंट इसने गोल में काटा हुआ है. आप उसको रेक्टेंगुलर शेप के अंदर काट लें, ज्यादा बेहतर होता है, उसको प्लेस करने में इजी रहता है. देन सी दिस hole is placed over this 0 area. This hole, whatever you have done, the 2 holes 4 to 6 millimeter gap, the one hole will be placed at your 0 area and other hole will be placed at your forward line, straight line जो आपकी सीधी जा रही थी, प्रोट्रूसिव रिकॉर्ड वाली जो लाइन थी, सेकंड लाइन उसके ऊपर आनी चाहिए आपकी. देन ये जो है आपकी स्टिकी वैक्स है. आपके पास स्टिकी वैक्स ना हो, ग्रीन स्टिक हो, ग्रीन स्टिक से भी आप इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं ओवर योर ट्रेसिंग टेबल, सो ताकि ये मूव ना करे. फिर इसको इंसर्ट करें पेशेंट के मुंह में. अगेन मैक्सिलरी रिम पेशेंट के मुंह में ही था, आपने सिर्फ मैंडिबुलर रिमूव किया जिस पर ट्रेसिंग आई थी, उसके ऊपर आपने ये लिड रख दी. जो अब मैंने आपको बताया था, ये लिड में 2 सुराख किए हुए थे. एक सुराख को आपने बिल्कुल 0 पॉइंट पे जो नॉच आपकी बन रही थी या एरो हेड का टिप जो था वहां पे रख दी और उसको फिक्स कर दिया विद द हेल्प ऑफ योर स्टिकी वैक्स और ग्रीन स्टिक. अगर आपके पास स्टिकी वैक्स आजकल नहीं होती, आजकल एल्फी का यूज ज्यादा है, आप ग्रीन स्टिक से इसको फिक्स कर दें. मॉडलिंग वैक्स से भी कर देंगे तो ये हो जाएगा. देन इंसर्ट इन पेशेंट्स माउथ. ये जो स्टाइलस था, ये जो पिन यहाँ नजर आ रही है आपको तस्वीर में, इसको इस होल के अंदर फिक्स करवाएं. पेशेंट को गाइड करें ताकि ये इस होल के अंदर जाके बैठ जाए. यहां जाके बैठेगा तो फिर जॉ आगे पीछे आपका मूव नहीं करेगा. जस्ट गिव मी अ मिनट सो दैट आई अटैच. Sorry for the inconvenience. So what you will do, you will fix this strip over this centric relation point, जिसको हम कह सकते हैं. We have understand that this is your centric relation point. Then insert it in patient's mouth and try to guide the stylus in this hole. ये जो हमने होल किया था
पीछे वाला होल जो सेंट्रिक रिलेशन पे आ रहा है, आगे वाले होल को चाहें तो फिलहाल बंद भी कर सकते हैं। अगर आपने 2 होल किए हुए चाहें तो आप एक होल पहले कर लें, एक फिर बाद में जब फॉरवर्ड रिकॉर्ड चाहिए हो जब कर। अब जब ये इसमें स्टाइलस फिक्स हो गया, योर जॉ विल नॉट मूव डाउन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड और लेफ्ट और राइट, सो इट इज इन योर सेंट्रिक रिलेशन राइट नाउ। Then what you will do, you will place a material in between your both of your rims. ये impression plaster है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, लेकिन हम इसको बना सकते हैं। आप सिंपल सॉफ्ट प्लास्टर को लेके उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करें तो फास्ट सेटिंग प्लास्टर बन जाएगा आपका। एंड देन प्लेस इट इन बिटवीन योर अपर एंड लोअर रिम। इस तरीके से आप इसको बीच में डाल सकते हैं। इसको पेशेंट के मुंह से रिमूव करें। वंस इट गेट हार्डर, सी दिस हियर, दिस स्टाइलस इज इन the hole there. You check it extraorally, confirm it whether this is okay or not. If it is okay, it is fixed there into your hole. Transfer it over your articulator. Articulator को के nuts को सारों को जो guidance का nut होता है इसको ढीला कर दें and guide it into your zero position. यहाँ पर आप इसको zero पे set कर दें। nuts को यहाँ पर readings होती हैं कुछ, मैं अभी आगे दिखाता हूँ आपको। zero पे set करके centric relation record को transfer कर दें over your the articulator. अब यही सेम प्रोसीजर आप प्रोट्रूसिव रिकॉर्ड के लिए भी कर सकते हैं। मैंने आपको हमने अभी जो पीछे वाला होल था उसको इस पॉइंट पे रखा था। जो आगे वाला होल होगा जो 4 to 6 मिलीमीटर गैप के बाद है, उसको इस लाइन के ऊपर रखें यहाँ पर, और पेशेंट को इस वाले को बंद कर दें और पेशेंट को गाइड करें ताकि स्टाइलस जो है वो इस वाले में जाके फिक्स हो जाए। जब इस वाले में फिक्स हो जाएगा तो ये आपके पास प्रोट्रूसिव रिकॉर्ड आ जाएगा। इसको निकालें, अगेन आर्टिकुलेटर पे ले जाएं और ट्रांसफर कर दें इसको। सिमिलरली आप लेफ्ट लेटरल एंड राइट लेटरल को भी इस तरीके से कर सकते हैं। आप उस स्ट्रिप को थोड़ा तिरछा करें और वो जो होल था उसको इधर ले आए, इस वाली लाइन के ऊपर यहां रख दें और पेशेंट को गाइड करें ताकि वो स्टाइलस इसमें जाके फॉल कर दे। तो आपके पास लेफ्ट लेटरल मूवमेंट रिकॉर्ड हो जाएगी। यहां अगर आप करेंगे तो राइट लेटरल मूवमेंट रिकॉर्ड हो जाएगी। सो बाय अ सिंगल मेथड you can record your protrusive record, you can record your centric relationship, you can record your left lateral and right lateral records. तो एक ही मेथड से, जो कि ग्राफिकल फॉर्म में नजर भी आ रहा है आपको, आप क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, you can do that. In other method जो कि tactile check record method है, उसमें it's difficult to see what you are doing basically, whether your centric is okay or not. So that is all experience, that is all about your experience. अगर आप बहुत अच्छे ऑपरेटर हैं, एक्सपीरियंस ऑपरेटर हैं, you are able to judge the things there. Otherwise this method is very good for the beginners, but this is more time taking than your occlusal check record method. So these two these two methods for recording your centric relationships are common as compared to other methods. That's why I just focus on these two methods there. अब आपको problems क्या हो सकती हैं while you are recording the centric relationship? बायोलॉजिकल डिफिकल्टीज हो सकती हैं, पेशेंट को न्यूरोमैस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन है, उसमें हम जब अभी हम अरेंजमेंट ऑफ टीथ पे जाएंगे देन यू विल सी कि हम थोड़ी सी उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करते हैं इन आवर अप्रोच। जब हम मेडिकल कंडीशंस डिस्कस कर रहे थे उसमें बताया था मैंने आपको कि देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स वेयर यू कैन मॉडिफाई योर ट्रीटमेंट अप्रोच। Then you have some TMJ problems. It is very difficult to record your centric relationship. Bite of convenience usko kehte hain, when you have missing left quadrant of your teeth and patient is biting on a right side in order to masticate the food for a longer period of time. If your patient is having this habit, this is called bite of convenience. So patient will not force into your centric relationship easily. It's very difficult. So we have to give bite habit breaking appliance, we used to call it. जिसको हम normally what we used to do, we used to add some acrylic in your posterior denture teeth in order to raise the bite. So anterior teeth will not meet, only the posterior teeth will meet. Ultimately that thing will break the habit of your patient there. So अभी इसको कंफ्यूज ना हो, दिस इज नॉट एट योर लेवल। बस ये समझें कि एक अप्लायंस बनाई जाती है जो बाइट ऑफ कन्वीनियंस को ब्रेक करती है। द अमाउंट ऑफ करेक्टर of saliva, if saliva is more copious, very thin, or very thick in nature, it would hamper the stability of your
basis there in patients में बहुत ज़्यादा saliva आप जैसे insert करते हैं maxillary rim और mandibular rims को with the denture basis there या bite blocks जो होती हैं आपकी saliva बहुत आता है तो it would lead to some instability in your prosthesis there in your denture base there, so that would cause some problem while you're recording the centric relationship. Then anatomical factor, resiliency of your supporting tissues, size and position of your tongue, character and resiliency of supporting tissues. For example, you have a flabby ridge and you did not address that ridge in your impressions. रिजवान साहब अभी आपको कराएंगे open window techniques वगैरह type की. बहरहाल जो आपके soft tissues होते हैं, where you have hyperplastic soft tissues over your denture bearing area, you have to address them with the special protocols. We used to record them mucostatically. We do not give any pressure to those tissues. अगर आपने उस पर pressure डाला, so that would be displaced, and you will record those tissues in their displaced state. So when you insert the prosthesis or bite blocks in patient's mouth, those displaced tissues will not accommodate your denture base, and ultimately after a few seconds you will see that your denture base is raising up from your supporting area. So that means your denture base is not stable. Size of the tongue, if the tongue is very bigger in size, will not accept, or your wax rims are very thick in size. Your tongue is normal but you have made very thick wax rims, so उसमें भी आपकी stability नहीं होगी of your denture bases there. So keep in consideration anteriorly mandibular wax rim 4 to 6 millimeter से ज़्यादा, 4 millimeter ही रखें क्योंकि दांतों की width 4 millimeter से ज़्यादा नहीं होती anterior teeth की. Posteriorly keep them maximum 8 millimeter, not more than 8 millimeter width. It's not like you are making a bunk of wax in and you are inserting it in patient's mouth. Your wax rim basically represent your teeth basically. Later on you will replace this wax with the teeth. So it has to be just like your teeth size. So keep this thing in your mind that never excel the limits. 4 millimeter anteriorly, 6 millimeter posteriorly width, not more than that. Character and size of your alveolar ridge, as I told you, you have some hyperplastic tissues, some zigzag appearance of your ridges. Somewhere you would find that there is a more atrophy than the other area. So it's very difficult to manage the situation in these cases. Then mechanical factor, stability is a mechanical factor. Having so many biological, mechanical, and some other reasons to instabilize your prosthesis. कोई भी reason हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया saliva ज़्यादा आ रहा है patients को, you have overextension in your dentures, आपने peripherally बहुत ज़्यादा green stick लगा दी थी, बहुत overextend हो गए थे, functional trimming ठीक नहीं की थी आपने, बाइट ब्लॉक्स सही नहीं बनाए, उसकी वेट्स बहुत ज्यादा रख दी है आपने, इस केस में भी ऐसा ही होगा. फिर पेशेंट फैक्टर्स हैं, ट्रॉफी हुई, बहुत ज्यादा ट्रॉफिक रिजेस हैं, या सिलाइवा बहुत ज्यादा आ रहा है पेशेंट के मुंह में, या पेशेंट जो है एंजाइटी में, अभी आपको मैं आगे फैक्टर्स बताऊंगा, उसमें एंजाइटी भी आती है पेशेंट की, तो पेशेंट विल नॉट कोऑपरेट विद यू. सो कैरेक्टर, so the stability is a vast area. When we will discuss all of your factor later on, we will see that stability is in every area. Impression record करें वहां पर भी है, jaw records करें वहां पर भी है, then we arrange the teeth वहां पर भी आ जाएगी. So at this level जब आप wax rim बना रहे हैं, यहाँ तक ये factors हैं कि आपका white block जो है वो ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए, आपकी बेस प्लेट ओवर एक्सटेंडेड नहीं होनी चाहिए, पेशेंट में को अगर बहुत ज्यादा सलाइवा आ रहा है तो आस्क द पेशेंट टू गार्गल with some mouthwashes in order to remove the ropey saliva from patient's mouth, and then insert the blocks and try to consider the time there. Try to manipulate the things in a quick way. So करेक्टर एंड द प्रेशर अप्लाइड व्हाइल रिकॉर्डिंग द सेंटिग्रेड, आपने जो आपका, अगर आप चिन पॉइंट गाइडेंस कर रहे हैं तब भी, और अगर आप बाइमैनुअल मेथड यूज कर रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी टेक्निकल. फोर्स का काम नहीं है, इट्स अ टेक्निक. अगर आप फोर्स बहुत ज्यादा लगाएंगे, यू आर नॉट बी एबल टू रिकॉर्ड द सेंट्रिक रिलेशन. सो योर टेक्निक डज मैटर्स.
या तो फिर आप ग्राफिकल मेथड यूज करें, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है बट इट्स वेरी गुड. पोस्चर ऑफ द पेशेंट, एज आई टोल्ड यू, जब हमने दोनों मेथड चिन पॉइंट गाइडेंस और बाइनैनुअल मेथड किया, दोनों की पोजीशन डिफरेंट है. एक में आप पेशेंट को सीधा बिठा के करते हैं, सामने खड़े होते हैं, हेड रेस्ट शुड बी सपोर्टेड. एक में आप बिल्कुल रिक्लाइन करके पेशेंट्स को फिर रिकॉर्ड करते हैं. सो द पोजीशन ऑफ योर पेशेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Then you have a psychological factor, anxiety, fatigue, frustration of your patient. Do not do the practice as we have seen that in the dental OPDs there. You call the patient early in the morning, Baba ji 9-10 baje aa jana, wo subah se aake baith jata hai, and you are coming at 12 o'clock from your jamshoro after finishing your classes. Patient is frustrated, fatigued, having anxiety there. Because of that, your patient will not cooperate with you in order to give you the centric relation record. Why? Because this centric relation record is a guided record. It's not ultimate there. You have to guide your patient, but your patient cooperation is very very important. So lack of cooperation will be there. So this is about your centric. Eccentric is almost same as your centric relationship, but there's few additional things there. What is the definition of your eccentric relationship? Centric के आगे e लगा दिया गया है तो ये eccentric बन जाता है. Any horizontal relationship of mandible to maxilla other than your centric means this 0 point we discuss in tracing method. There we have an arrowhead. The head of arrow is your centric relationship, and the remaining lines are your eccentric relationship from understanding point of view. So what is the importance of your eccentric relationship? If you want to program your articulator, means you want that whatever the movements your patient is able to perform, you want to duplicate them on your articulator. So you need these records. Until and unless you will not record the centric relationship and eccentric relationship, you are not be able to program your articulator completely for your prosthesis. So that would help you out to avoid any interference in your occlusion, any occlusal error in your, prosthesis, and that would improve the stability of your prosthesis. Otherwise, you would say that your prosthesis is going to be functional and aesthetically pleasing if you are following these protocols. So it has to establish an occlusion which is in harmony with the functional movements of your jaws. This is the basic objective. So eccentric relation को we can divide into protrusive and lateral relation. यानी jaw को हम forward move कर सकते हैं या left और right move कर सकते हैं. Left right move करेंगे तो lateral relations को हम we can further divide into left lateral and right lateral relationships. So protrusive relation जो पहला relationship है, पहले group को हम discuss करते हैं. The protrusive relationship is very easy to understand. We bring the jaw forward just like in this picture there. Bring your mandible in edge to edge. That is almost 4 to 6 millimeter protrusion. 4 to 6 milli. Beyond that, we do not need anything. We can move the jaw, ahead of this limit. We can move jaw to even 10 to 15 millimeter forward, but we do not need that movement. We just need 4 to 6 millimeter, means edge to edge bite, edge to edge bite. And if you see this edge to edge bite here, if you will observe even on your jaws, being a dentist, observation is very, very important. So if you bring them edge to edge, you will see the disocclusion of your posterior teeth. You can see this very clearly here. This is normal phenomena. This is normal in dentate patient. This is normal occlusion. This is a sign of normal occlusion. This is called Christensen phenomenon. When you protrude the jaw in edge to edge and you will feel that you have a disocclusion of your posterior teeth, this is called Christensen phenomena. This is the normal characteristic of a normal occlusion there. So this occlusion is a sign of a normal natural occlusion, and this forward movement is called protrusive guidance. This is called protrusive guidance, and this protrusive, we want to record it
and we want to transfer it over your articulator, you can do by a simple graphical method and protrude the jaw 4 to 6 millimeter forward and transfer it over your articulator. So this protrusive guidance is very, very important. Sometimes you do not need lateral records, only protrusive record is sufficient, and by one formula we can draw the lateral readings there. So no need to go for lateral records there, just record the protrusive guidance and transfer it over your articulator. See this slot, you can observe this slot. This is a ball there. This is condylar analog. This is called condylar analog. You can see here, you can see here, and you can see this slot there. This is called condylar guidance slit, yeah, condylar guidance slot. This slit or slot is basically representing the forward movement and the downward. See the angle of this slit there. This is angulated there. So your jaw do not move just straight forward like this. It moves downward and forward. Both the things are happening together. So whenever you move the jaw forward, your both of the condyles, left condyle and right condyle, move downward and forward when you go 4 to 6 millimeter forward, not opening the jaw. You are moving the jaw forward. Similarly, when you move the jaw laterally on one side, suppose you are moving the jaw to your left side, you are moving the jaw to your left side, the ipsilateral means left side head of the condyle is called uh, working side condyle, and the opposing side condyle is called balancing side condyle. If you are moving the jaw left side, one of the condyle on the left side is called working side. The side to which you are moving is a working side condyle, and from where you are moving means you are moving to left, that means you are moving to left from right, that condyle is called balancing condyle. So one condyle, whenever your jaw moves on a one side, the same side condyle is called working side condyle, and the opposing side condyle is called balancing condyle. So on both the sides, the head of the condyle represents different movements. When you move left, the same side condyle, which is called working condyle, only rotates and slight outward movement. It only rotates a bit and slight outward movement. That is why this side movement is called, ये जो आपको purple color में नजर आ रहा है, Bennett shift movement. Means on a working side only you are presented with the Bennett shift, while on the other hand, from where your jaw is moving, not only moving downward, forward and medial. On a balancing side, there are three movements are happening there. One is forward, then downward and medial. That's why you are able to move on a left side. Otherwise, if your balancing condyle is not be able to move forward, downward and medially, you will not be able to move the jaw on the left side. So this left side area is called Bennett movement. Why? On this side, a complete downward, forward and medial movement is going on. So that's why this side of condyle, the balancing condyle movement is called Bennett movement. So as I told you, it's not necessary that you have to record the lateral records. There are few articulators like Hanau's articulator will not be able to transfer the lateral records. They only able to record the forward records. That is your protrusive records. This protrusive record you will record and you will transfer it over your articulator. Just only your forward record you will record and transfer it over your articulator, और उस articulator पे एक formula लगाएंगे, that is your L is equals to H upon 8 plus 12. अब इसमें मैं बहुत सिंपल करके आपको बताता हूँ क्या है ये चीजें, जरा सब पीछे लेके चलते हैं.
see here in this articulator, ये थोड़ा सा जहां मेरा कर्सर है इसको जरा concentrate करें तो you will see the measurements here. You will see different lines and some readings written over here. So when you transfer the protusive record, you will bring this analog forward. This will see this line on this brass area. एक brass area पे आपको एक line नजर आ रही है. Wherever this line is coming, wherever this line is coming, just record this reading. For example, if it is 30, this H is your 30. This horizontal guidance, H means horizontal guidance. When you do transfer the forward record on your articulator, whatever the reading you are getting, that is called H, horizontal guidance. See this brass portion, this mark will give you the idea what is the forward reading there. And this reading you will record, this reading is basically is a H part of your formula. So what you will do, you will take this reading and you will use this formula. Lateral guidance is obtained from your horizontal guidance. For example, if it is 30, add the 30 here, divide it by 8 and plus with the 12. Whatever the reading you will get, that is your lateral guidance. That is called L. So this lateral guidance, without any lateral records, you can obtain with the help of this Hanno's equation, Hanno's formula. You should keep this in your mind that this mathematical formula is not based on any mathematical principle. This was given by Hanno. That's why this is called Hanno's formula. This formula is basically is not based on your mathematical principles. This is a simple formula and very effective formula. Till to date, we used to use this formula and this is 100% effective formula. So by this way, you can have lateral guidance. अब lateral guidance को किधर पे करते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ वो क्यों ली जाती है क्योंकि जब आपका lateral movement हो रहा है उसमें Bennett shift भी हो रही है Bennett movement भी हो रही है तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ see here एक नट ऊपर की तरफ लगा हुआ है this is your lateral guidance nut. See this ये बिल्कुल straight है. If you see this condylar guidance analog there, complete analog, this is straight, but this is angulated. इसको अगर आप देखें तो this is medially angulated because we have settled this L reading here. जिसकी वजह से ये टेढ़ा हो गया है एक स्ट्रेट है ये वाला लेफ्ट साइड का दूसरा इस तरीके से so when you move laterally on this side only rotation is possible and on this side it moves downward forward and slightly medially. Why? Because we keep this angle, this L angle on this side. So by this way we are able to duplicate the same movement as you have in your patient's jaws over your articulator. इस चीज को हम क्लिनिकली भी डिस्कस कर लेंगे जब हम क्लिनिक्स में जाएंगे कि किस तरीके से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं और किस तरीके से प्रोग्राम करते हैं आर्टिकुलेटर. दिस इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग ऑफ योर articulator. So if you move forward straight, you have to keep both of your these analogs or slots straight. But if you are transferring the lateral records, you have to adjust the L reading over here by which we obtained from your Hanno's equation. And that Hanno's equation is L is equals to H upon at 8 plus 12. So by this you can obtain a reading and that usually within 15 to 16 millimeters. 16 millimeters के अंदर वो reading आती है आपकी 16 millimeters के अंदर आप इसकी यहाँ reading adjust कर लें. यहाँ पर readings दी हुई होती हैं 1 to 20 तक दी हुई होती है. Whatever the reading is coming, you just bring your nut to that level and fix it over there. So by that way you will get this lateral reading there. It's difficult to understand but very important. Thank you. Any question you want to ask? So hope you understand something. It's a difficult and dry topic. If you just understand the centric relationship is more than enough, then there are
more things there. प्रोट्यूसिव रिकॉर्ड में दोनों कंडाइल्स जो होते हैं डाउनवर्ड फॉरवर्ड मूव करते हैं. लेटरल मूवमेंट में एक कंडाइल सिर्फ रोटेट करता है, दूसरा डाउनवर्ड फॉरवर्ड एंड मीडियल मूव करता है. इसको बेनेट मूवमेंट कहते हैं, इसको बेनेट शिफ्ट कहते हैं. वर्किंग साइड पे जो हो रही होती है, आपको लाजमी नहीं है कि आपने लेटरल रिकॉर्ड्स यूज जो है रिकॉर्ड करने हैं फिर उसको ट्रांसफर करना है. आप सिंपल प्रोट्यूसिव रिकॉर्ड को, फॉरवर्ड रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करें, ट्रांसफर करें ओवर द आर्टिकुलेटर. उससे एच रीडिंग जो आपकी आए, उस एच रीडिंग को हेनोज इक्वेशन में डालें और उससे आप एल रीडिंग ऑब्टेन कर लें. By this way, you can have both your percussive and the lateral records on your articulators transfer accurately. So by that way, you can program your articulator. Programming se murad, you have to duplicate the movement, whatever the patient's jaws are producing there. If you are able to do that, you would have a best clinical significance as far as your occlusion is concerned there. So this is all about for today's lecture. Inshallah, next time हम फिर arrangement of teeth पे बात करेंगे inshallah. Thank you. सर जी बेटा. सर वो आपने जो बताया था कि ट्रेसिंग करते हैं ना हम लोग, तो सर जब ट्रेसिंग आ जाती है हमारे पास तो हम वो प्लेट क्यों रखते हैं? ट्रेसिंग तो आ गई ना, उसको हम ट्रांसफर कर लेंगे आर्टिकुलेटर पे, नहीं प्लेट ना से बेटा, उसको देखें फिक्स क्यों कर रहे हैं? देखें बेटा, ट्रेसिंग तो मुंह में आई ना पेशेंट के, वहां जॉ रुकेगा कैसे? उस लेवल पे रुकेगा नहीं ना. वो तो आपने मूवमेंट्स की थी, फॉरवर्ड मूवमेंट की, बैकवर्ड की, फिर लेफ्ट मूवमेंट की, फिर राइट मूवमेंट की, इसी तरीके से किया था ना आपने. लेकिन वो जॉ जी रुक तो सर. नहीं रहा था ना, डायनेमिक था. उसको सेंट्रिक रिलेशन में रोकें कैसे? आर्टिकुलेटर पे ले जाने के लिए तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए सेंट्रिक रिलेशन की. समझ रही हैं बात को? तो उसको जी सर. रोकने के लिए हमने एक स्ट्रिप ली, उसमें 2 सुराख किए. उस सुराख को उस 0 पॉइंट के ऊपर रखा, जो एरो हेड का 0 पॉइंट आ रहा था उस पे रखा, और वो जो स्टाइलस था, पिन थी, उसको गाइड किया ताकि वो उसमें जाके फॉल करे. समझ आ रही है बात की? जब वो जी उसमें सर. फॉल करेगी, वो जी उस सर. स्ट्रिप को हमने स्टेबलाइज किया हुआ था ग्रीन स्टिक से या स्टिकी वैक्स से. अब वो हिलेगा नहीं जॉ, फिर आगे पीछे जब हिलेगा नहीं, सेंट्रिक जी रिलेशन सर. में चला जाएगा. फिर आप उसको वहां से निकाल के प्लास्टर डाल के या कोई और मटेरियल डाल के बीच में उसको निकालेंगे और आर्टिकुलेटर पर ट्रांसफर करेंगे. समझ आ रही है बेटा? जी सर. वो इसलिए एंड सर इस वो तरीके से. जो जो आपने निक एंड नॉच मेथड बताया था, उसमें भी हमने ऑक्लूजल रिम्स पे नोचेस एंड निक्स बना दिए हैं, ठीक है. फिर अब उसमें आपने फिर वैक्स डाली हुई थी शायद, अलू वैक्स. तो सर एल्यूएक्स वो है. वैक्स पे जो वैक्स पे हमारे पास पैटर्न आ रहा है, फिर हम मतलब उसको वो वैक्स हम क्यों लगा रहे हैं? उन दोनों को मिलाने के लिए, ताकि हम आराम से आर्टिकुलेटर पे इसको लगा एल्यूएक्स जो सकें. एल्यूएक्स जो होती है वो स्टेबल है. एक दफा वो हार्ड हो गई ना, तो अपनी जगह से हिलेगी नहीं. समझ रहे हैं बात को? उसमें मेटल जी का सर. कंपोनेंट ऐड किया गया है ताकि जो भी, जहां आप पहले उसको गर्म पानी में डालें, उस वैक्स को आप फ्लेम पे नहीं रखते हैं, गर्म पानी में नरम करते हैं उसको, वो पिघलती नहीं है वो वैक्स. समझ रहे हैं? नरम होती है खाली बस. उसको नरम किया और उसके बाद वो जो स्लॉट बनाया हुआ उसमें भर दिया आपने रोल करके. समझ रहे हैं? उसके बाद पेशेंट को कहा जॉ सेंट्रिक रिलेशन में बंद करा लिया, देखा लाइंस मैच कर रही हैं, हाँ मैच कर रही, वहीं थोड़ा सा उसको देर पकड़ के रखें, आधे मिनट के अंदर अंदर वो हार्ड हो जाएगी. दोनों जॉस को आप निकाल लें तो वो सेपरेट नहीं होगी फिर आसानी के साथ. समझ रही हैं बात को? मतलब सर रिकॉर्ड को सेव करने के लिए हम वो फिर सेव करने के लिए बिल्कुल. लगा वो रहे हैं. जो दोनों रिम्स को आपने मिलाना है ना, बाइट रजिस्ट्रेशन मटेरियल डालने का मकसद ही यही है कि दोनों रिम्स जब आपको सेंट्रिक रिलेशन पे साथ निकालने हैं मुंह में से, समझ रहे हैं, और उसको आर्टिकुलेटर जी पे लेके जाना है, तो उसके लिए हम बाइट रजिस्ट्रेशन मटेरियल यूज करते हैं. उसमें इंप्रेशन प्लास्टर भी बताया मैंने आपको, ये इलास्टोमर्स में भी मैंने बताया कि बाइट रजिस्ट्रेशन मटेरियल कैटेगरी आती है पूरी की पूरी, या जिंक ऑक्साइड यूजोनॉल जो आप लोगों को नॉर्मली समझ में आता है, यूजोनॉल फ्री मटेरियल्स हैं आजकल, वो यूज हो रहे हैं, वो यूज कर लें आप, या एलयूएक्स यूज कर लें. ये 4-5 मटेरियल हैं, इसके अलावा कोई छठा मटेरियल नहीं है आपके पास. ओके सर, थैंक यू. थैंक यू, यू वेलकम. So any question? So I will try to upload this lecture on Facebook as well. So inshallah you can revise this lecture from there. Thank you. Thank you so much.